Hello all, and IOS welcomes you all in this educational video for subject Library Science and Information. This is for senior secondary level. Lesson number 9, Organization of Library Material, Concept, Need and Purpose. This is part 1. First we will do difficult words. I already choose difficult words from the chapter. Let's go through with it. First word is organize. हमारे पास बहुत सारी बुक्स होती हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, तो उन्हें शेल्फ में लगाना अच्छे से एंड उन्हें ऑर्गेनाइज करना, इसका मतलब ऑर्गेनाइज होता है. वर्ड का मतलब क्या है? यूटिलाइजेशन. बहुत सारे चीज़ों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल टाइम, कि हम टाइम का यूटिलाइज करना, टाइम मैनेजमेंट करना, और पढ़ाई के लिए, लर्निंग के लिए अपना टाइम यूटिलाइज करना. तो यूटिलाइजिंग का मतलब है यूज़. और पैसे बचाना आगे फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर प्लानिंग या पर्सनल प्लानिंग, ज़रूरतों के अकॉर्डिंग अपना पैसों का यूटिलाइज करना, यूज़ करना. और भी नए नए आइडियाज़ निकाल सकते हैं. टाइम हो गया, मनी हो गया, एजुकेशन हो गया. तो इस वर्ड का मतलब है यूटिलाइजेशन, मतलब यूज़ करना. टेक्सचुअल. टेक्सचुअल में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कि हम कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं, फ़ोन में टाइप करना, और बुक्स हो गई, बुक्स लिखी हुई हैं, रिटन बुक्स हैं, तो टेक्स्ट. सीनियर सिटीजन, तो यंग लोग नहीं, जो सीनियर हैं, जिनकी एज 60 से ज़्यादा है, तो उनको हम सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में रखते हैं, जो अपनी जॉब से रिटायर हो चुके हैं. नेक्स्ट स्लाइड. कंपोजिट. बहुत सारे सब्जेक्ट होना, फॉर एग्जांपल मैथ हो गया. मैथ की एक बुक है, उसमें वॉल्यूम्स है बहुत सारी, तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, ऐसे इन सभी को कंबाइन करना. फॉर एग्जांपल मैथ की बुक हम देखते हैं कि एक बुक है, उसमें बेसिक है, तो उससे थोड़े से अपर एडवांस हो गए, वॉल्यूम 2 हो गई, उससे और अपर. तो ऐसे करते करते चारों बुक्स का कंबाइन कम कह सकते हैं कि वो वॉल्यूम एक कॉलम में रखी हुई है. कंपोजिशन कह सकते हैं हम उसे. पीरियोडिकल्स, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. मैगजीन्स हो सकती हैं, कलरफुल मैगजीन्स हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं. मैगजीन फॉर एग्जांपल के लिए बहुत सारी मैगजीन में टॉपिक होते हैं जो डेली लाइफ के उसमें कवर होते हैं. फॉर एग्जांपल मेकअप से रिलेटेड हो गया, साइंस से रिलेटेड हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया. और ये ज़्यादा हैवी भी नहीं आती, बहुत पतली सी आती है मैगजीन. और इसमें एवरीडे न्यूज़ की टॉपिक्स होते हैं, और वो संडे टू संडे या एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड होता है जिसमें वो पब्लिश होती हैं. 8.
एड मीन्स हेल्प। कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टीचर से कहते हैं कि मैम चैप्टर समझ नहीं आ रहा, आप एक्सप्लेन कर दीजिए, तो टीचर उनकी हेल्प करते हैं। प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब बिगिनिंग। कोई भी फर्स्ट स्टेप हम लेते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, स्टार्टिंग का फर्स्ट टाइम हम कोई भी चीज़ करते हैं तो वो हमारा प्राइमरी होता है। जब हम कोई चीज़ करने के लिए स्टार्ट करते हैं, इसमें हमारे पास दो वर्ड्स हैं, प्रिंट एंड नॉन प्रिंट। एज यू कैन सी, in print we have books and in non-print for example in books फर्स्ट राइटर बुक्स लिखता है एंड वो पब्लिश होती हैं और वो हमें बुक शेल्फ्स में या लाइब्रेरी में मिल जाती हैं। बट इन अदर हैंड जो नॉन प्रिंट मटेरियल होता है वो ऑनलाइन होता है, इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। आप उसमें कोई भी टॉपिक देख सकते हैं सर्च करके। वो न्यूज़ हो सकती है, मैगजीन्स हो सकती हैं या आर्टिकल्स हो सकते हैं। तो ये दो सोर्सेज हैं, बुक एंड नॉन प्रिंट में कंप्यूटर इंटरनेट। गुड मतलब एक्सीलेंट, एक्सीलेंट का मतलब है बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सेपरेटली, इट्स मीन है एक साथ नहीं, अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल साइंस, मैथ, एनवायरमेंट स्टडीज़, आप इकट्ठे ये सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, आपको अलग अलग ग्रुप्स में ये पढ़ने पड़ेंगे सेपरेटली। और आप देख सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल हैं, बहुत सारे लोग एक ग्रुप में हैं, उनको हम उनके जेंडर के बेसिस पे या उनके एज ग्रुप के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेटली मीनिंग फास्ट एंड, तो एक बुक है, फास्ट एंड मीन्स कि हम बुक को, जो बुक के पेजेस हैं उनको अच्छे से आपस में कंबाइन कर दें, बाइंड कर दें। स्टोरेज, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जैसे बुक्स हो गई, न्यूज़पेपर हो गई, मैगजीन हो गई, उनको किसी एक लोकेशन में, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी में ही कोई एक लोकेशन में उन्हें संभाल के रखना, सो दैट किसी को भी वो चाहिए हो, एक्सेस करना हो तो वो एक्सेस कर पाए, वो एक्सेसिबल हो और फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी उसे इस्तेमाल किया जा सके। स्टोरेज हम बहुत सारी चीज़ों का कर सकते हैं, कपड़ों का कर सकते हैं, बुक्स का कर सकते हैं, तो हमारा वर्ड है स्टोरेज। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फिक्शन और नॉन फिक्शन, फिक्शनल। नॉन फिक्शनल में होता है इमेजिनरी, सॉरी फिक्शन में होता है इमेजिनरी, कि हम अपने मन से इमेजिनेशन का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रुपेंजल की स्टोरी है, क्या ऐसा रियल लाइफ में हो सकता है? इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, सो इट्स अ फिक्शनल। एंड इन अदर हैंड नॉन फिक्शन, it's mean on true events, based on true events or true stories. For example, Mahatma Gandhi. So we can see their stories. We have proof that Mahatma Gandhi fight for India's freedom, and we can see many examples. Which is true is non-fiction. एंड जो हम इमेजिन कर पाए, जो इमेजिनरी स्टोरीज होती हैं वो फिक्शन होती हैं। इंट्रोडक्शन,
So far we discussed difficult words. Let's start with the chapter. First we discuss introduction. A library is not just a place or a building filled with books and other reading materials, but it is also a place where information sources are organized so that users can find the information that they need. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को बहुत ही बेसिक लेवल की बुक्स चाहिए तो वो लाइब्रेरी में जाके ढूंढ सकता है. किसी को रिसर्च करनी है, उसको रिसर्च के अकॉर्डिंग एडवांस लेवल की बुक्स चाहिए उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो बुक्स भी एक्सेस कर सकता है, अवेल कर सकता है लाइब्रेरी से. बट ये कॉलम सेपरेटेड होते हैं. रीडर की नीड्स के अकॉर्डिंग. बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जो फिक्शनल होती हैं, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स होती हैं, वॉर पे होती हैं, हिस्ट्री पे होती हैं एंड कंप्यूटर रिलेटेड. तो वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक चूज़ करके या सब्जेक्ट चूज़ करके बुक लेकर वो पढ़ाई कर सकते हैं. Then information sources are organized carefully and access to textual and non-textual material in paper-based and digital collection is easy. Maximum utilization by users can be ensured. तो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट भी होते हैं, नॉन प्रिंटेड भी होते हैं. किसी को ऑनलाइन चेक करना हो तो वो भी कर सकते हैं. ब्रेक. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIUS शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है. NIUS माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्तर पर समावेशी और लचीली शिक्षा व व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. भारत सरकार कौशल विकास से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है. स्कूली स्तर पर आवश्यकता आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से युवा कुशल होकर निजी व्यवसाय और सेवाओं में जा रहे हैं. NIUS कृषि, पशुपालन, सौंदर्य, इंजीनियरिंग, ICT, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, गृह विज्ञान, सिलाई कढ़ाई क्षेत्रों में 100 से भी अधिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है. NIUS अपने अध्ययन केंद्रों यानी AVI के माध्यम से इन पाठ्यक्रमों का संचालन, प्रायोगिक प्रशिक्षण व व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम यानी PCP का आयोजन करता है. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद NCVET एक राष्ट्रीय नियामक है.
यह प्रशिक्षण प्रणालियों के विकास, गुणात्मक सुधार और विनियमन के लिए जिम्मेदार संस्था है, जो विभिन्न संस्थाओं व मूल्यांकन एजेंसियों को मान्यता प्रदान करता है। रोजगार क्षमता में सुधार व त्वरित विकास के लिए NIOS ने NCVET के साथ हाल ही में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। अब NIOS के NCVET स्वीकृत पाठ्यक्रमों को दोहरी मान्यता मिलेगी व शिक्षार्थियों को उन्नत प्रमाणन प्राप्त होगा। इससे शिक्षार्थियों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रति लोकप्रियता बढ़ेगी एवं स्वीकार्यता का विकास होगा। कम शुल्क और दोहरी मान्यता वाले इन पाठ्यक्रमों में प्लम्बिंग सेक्टर से जुड़े ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफायर टेक्नीशियन कोर्स के साथ NIOS ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन प्रारंभ कर दिया है। भविष्य में अन्य पाठ्यक्रमों को इसी क्रम में विकसित कर NIOS आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देगा। निश्चित ही इससे शिक्षार्थियों को रोजगार व स्वाभिमान मिलेगा। ऊर्जावान युवाओं, NIOS के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से आज ही जुड़िए। अधिक जानकारी व प्रवेश के लिए लॉग इन करें www.nios.ac.in। Objectives. Let's discuss these points. First is explain the needs and purpose of organizing library materials. Next is identifying categories of library materials. And next, list out various types of print and non-print library materials. Explain their values in library. Identify electronic library material. Describe their use and functions in library and enumerate the steps in organizing the library material. First, library materials. And this first point is also known as library documents. The library materials are recorded of human knowledge on paper or in electronic form of easy handling. Storage and use prevention. The information contains in the documents represents the thoughts, content and knowledge Documents are available in a variety of print and non-print forms. Option number 3, library is a collection of information, sources and services. This collection is maintained by the library
for different type of users. Fourth point, the users may be children or school students, teachers, researchers, or senior citizen, and so on. The primary goal and job of a library is to aid its user in their quest for knowledge. Fifth point, thus an excellent collection of document and required for providing service to the users. Next, library materials or documents may be available in variety of forms which include both the print and the non-print material. You all know in print materials, as you can see in the list, first is book, story books, true events books, fictional books. Second category is periodicals. Next is newspapers, global news, Indian news, or local newspapers. Fourth is dissertation and thesis. Next, standards. Sixth is patents. Seventh, maps, global maps, national maps, Indian maps or star maps, oceans maps, etc. or geographical maps, etc. Next is reports. All are the printed materials available in the library. Now, books. We discuss about books in details. A book is defined as a written or printed literary work which is separately published and has an independent physical existence, with pages fastened along one side and encased between protective covers. Books constitute
a major portion of any library's collection. Second point, a book can be simple or composite, single volume or multi volume, journal book, a textbook. A textbook or a reference book. Beside this, books can be fiction and non-fictional books. Third point is information on a topic is arranged in such way that a beginner can acquire knowledge about that topic systematically. For example, if there is a 4 volume in book, so then a beginner can start with volume 1 to last 4. Fourth point, textbooks are used as part of taking a course and are usually written so that they are complete and understandable on their own. Periodicals. A periodical is a publication with distinctive title which appears at stated or regular intervals without prior discussion as to when the last issue shall appear. Second point, it contains articles, editorials, features, columns, stories, or other written by several contributors. Periodicals are important source for current information on any subject.
Point number 3, UNESCO has defined a pre, pre, periodicals as publication that constitutes an issue in a continuous series under the same title, published at regular or irregular intervals over an indefinite period. Individual issues in the series begin numbered consecutively or each issue being dated. Periodicals are also referred to as serials or journals. Beside these, magazines are the most typical type of periodicals. Fifth, the important aspects about the subject material of periodicals is that the latest or current information is provided to the readers through them. The new issues Sixth point, magazines also published special issues on different topics like health, education, food, etc. For example, India Today, a magazine, has published an issue on Best College of India. Outlook is another magazine. Next is newspaper. Newspaper contains the world, national, state and local news. National, state and local areas news. They carry rich editorial opinion, columns, featured articles and entertainment items. Very often the news items or the stories are also supported by illustrations and photographs.
A lot of newspapers bring out glossy and colored supplements in order to attract more readers. For example, the Times of India, the Hindustan Times, some newspapers have only web-based editions. And other example is New York Times on the web www.nytimes.com, and next is Daily Pratap. We read about printed document or materials. Now we discuss about non-printed materials. First, non-printed materials are defined as many materials available in forms other than the printed material or printed matter. These are rapidly becoming important information and learning resource material in modern libraries. Third point, non-printed materials differ from printed materials in several ways. One of the chief difference is that a machine must serve as a mediator between the information and the users of non-printed material. The non-printed materials are available in two categories, namely the audio-visual materials and the electronic materials. Audio-visual materials. Audio-visual materials is a generic term to describe information content held in storage and transmission media formats that use images and sounds rather than or something in addition to textual matter. Second point, audio-visual means material which has both a sound and visual component, such as slide tape representations, film, television programs.
Third point, these materials, also called instructional media materials, are educational aids that work primarily through the senses, especially hearing and seeing. You can see in the pictures tape recorders, CD, paper tape, rolls. All these are examples of non-printed materials. Audio visual materials. Audio visual aids are also called instructional materials. Second, audio literally means hearing. And visual means that which is found by seeing. Audio means hearing and visual means seeing. Next is, so all such aids which endeavor to make the knowledge clear to us through our sense are called audio visual aids. Audio visual aids. Point number 4, all these learning materials make the learning situations are real as possible and given us first hand knowledge. So when we study in classroom, टीचर्स हमें सब्जेक्ट हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, तब हमारे पास प्रूफ नहीं होता, बट इनके थ्रू हम टीवी में देख के, न्यूज़ में सुन के प्रूफ इकट्ठा कर सकते हैं और जान सकते हैं कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है कितना ऑथेंटिक है. फिफ्थ पॉइंट, देयरफॉर एनी डिवाइस which used to make the learning experience more concrete, effective, realistic, and dynamic can be considered as audio-visual material. It can be a story, research, teaching, etc. These are the options. First is audio cassette. Second is videotape.
Third is motion picture film. Fourth is slides. Fifth is microforms. Sixth is CD-ROMs. Next is DVD. Eighth is photographs. The libraries having those materials also have the equipment used in accessing and reading them, such as motion picture projectors, television sets, record and tape players, and overhead projectors. So far we discussed part 1. In next slide we will discuss part 2. Hope you all understand what is the difference between printed material and non-printed material. Thank you.